इंफॉर्मेशन होगी आपके पास स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। उन स्टेटमेंट्स को देखकर आपको ये डिसाइड करना है उन स्टेटमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या ये आंसर यूनिक होगा। यूनिक होगा, देखिए दो बातें समझाई है मैंने। पहले मैंने कहा क्या आंसर आएगा, दूसरा इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर, इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर, अगर आंसर आ गया तब क्या, तो क्या वो आंसर यूनिक होगा। फाइन, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। if you're solving if you are given a question and that question is followed by certain information in the form of statements, right, you need to identify whether the information provided in the statements is enough to answer the given question or not. If it is enough, whether it will be providing a unique solution or not, that also we need to identify. This is it, बस यही कर रहे होते हैं। So sir, what type of questions will be there? So there is no specific topic-wise boundation. The topics may range from basic quantitative aptitude to certain reasoning questions. Fine. Aptitude reasoning combine भी हो सकते हैं, individual भी आ सकते हैं। तो ये इसके टॉपिक की विड्थ बहुत ज्यादा है, विड्थ बहुत ज्यादा है। सर हमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्या? बेसिक आइडिया आपको हर एक क्वेश्चन का होना चाहिए, हर एक टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए। फाइन। और अब आपको एक्चुअली न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट ये कंफर्म करना है कि आंसर यूनिक आ रहा है या नहीं। अगर आंसर यूनिक आ रहा है तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ऑप्शन मार्क कर रहे होंगे। नहीं आ रहा है इन दैट केस ऑल्सो आप ऑप्शन मार्क कर रहे हो। कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं, कैसे होता है, इन सब की बात आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा सफिशिएंसी, यहाँ वही सारी बात है जो हम कह रहे थे कि टॉपिक्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, तो उन सारी बातों पर बात। लेट्स हैव अ लुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के लिए आपके पास कुछ डायरेक्शंस है। Each of the questions below consists of a question and two statements numbered 1 and 2 are given below it. You have to decide whether the data provided in these statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and answer the question. Choose the correct option as per following statements. So what we need to do, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके साथ दो स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। आपको दोनों ही स्टेटमेंट रीड करने हैं और अकॉर्डिंगली अपने आंसर ऑप्शंस मार्क करने हैं, अपने आंसर ऑप्शंस मार्क करने हैं। तो आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे, कब मार्क करेंगे, डिटेल्स आर हियर। We can choose our answer as option A. We can choose our answer as option A when data in the statement 1 alone are sufficient to answer the question, while data in statement 2 alone are not sufficient. That is, statement 1 से आपका एक यूनिक आंसर आ रहा है, statement 2 से आपका एक यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। या तो आंसर नहीं आ रहा है या आंसर यूनिक नहीं है। फाइन, इन बोथ द केसेस हम आंसर मार्क कर रहे होंगे ऑप्शन ए। Let's talk about option B. If the data in statement second alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Just flipping हो गई है। यहां बात हो रही है statement 2 is sufficient but statement 1 is not sufficient. Fine, then we will be marking our answer as option B. Let's look at option C, D and E as well. So C says if the data in either statement 1 alone or second alone are sufficient to answer the question. So each statement individually is capable of, each statement is individually capable of answering the given question in unique manner. अगर ये possible है तो अब हम आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। What about D? If the data in both statements are not sufficient to answer the question, there will be times जहां पर data given in statement 1, statement 2 combine, then too you will not be able to get the answer. In that case, we will be marking our answer as option D. Fine. Now let's talk about if the data in both the statements, first and second, together are necessary to answer the question. Statement 1 as well as statement 2, both statements are required to answer the given question. Then we will be marking our answer as option E. I hope चीजें समझ आई है। आंसर किस तरह से मार्क करना है एटलीस्ट ये समझ आए। सर क्वेश्चन कुछ नहीं सॉल्व हुआ और आप बोल रहे हैं चीजें समझ आइए। When to choose which option, I hope this is clear after this. If not,
please replay this video. Please replay this video. Pause it here. Replay it. एक बार सारे ऑप्शन की क्लैरिटी ले लीजिए, because in upcoming slides, we'll have a question followed by certain statements. We'll not be having these options available. Fine. अच्छा, एक और रिक्वेस्ट, आप एक काम ये कर सकते हैं, can take a screenshot of this slide, right? Take a screenshot of this slide. यहाँ ये जो डेटा है, ये जो ऑप्शंस वाला पार्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे रखूंगा, you must be able to identify what is given and what we need to answer. आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा ये आप डिसाइड करेंगे, इसीलिए प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. Okay, so let's get started with the very first set of questions. So in every slide I have put just 2 questions. So the very first, average weight of 30 children out of 46 in the class is this, and that of the remaining children is this. A child having weight more than 40 kg is excluded. So out of 46 students, first 30 students का average weight दिया है, then remaining का एक average weight दिया है, and it is said a child having weight more than 40 kg is excluded, right? So there are 45 students जिनके दो ग्रुप बनाए गए. First is of 30 students, second is of 15 definitely, and the 46th one has been left. Fine. Statement one was, so question क्या है? ये तो statement one read किया है मैंने. So question is, what will be the average weight of the remaining class? So let's talk about question first. What will be the average weight of remaining class? Statement one कहता है, average weight of 30 is this out of 46, and that of remaining is this, and a child having weight is excluded. Fine. So क्या statement one alone is enough? I think not. Why? Why not? Remaining class, first 30 का weight तो आपको पता है average, right? Remaining, and that of the remaining is this. Fine. तो क्या ये वो 15 का weight है? No, ये 16 का weight है. First 30 का average weight आपको गिवन है, remaining 16 का weight है. A child having weight is excluded. अब इस child को अगर हमने exclude कर दिया है, तब क्या remaining 15 का average weight ही है? नहीं, अगर इस एक को exclude कर दें तो अब जो 15 बचा है उनका average weight क्या होगा? Why we cannot answer our question as of now? Sir, लगता तो है आंसर कर सकते हैं. The reason is the child that has been excluded, उस child का weight I don't know. What I know is his weight is more than 40 kg. His weight could be 42 kg, 50 kg, 47 kg, 43.5 kg, 100 kg, any number more than this. Fine. And if I don't know that number, the remaining average I cannot calculate. Hence, answer is not possible with statement one alone. Fine. As soon as I identify this, I can definitely eliminate option A and option C as my possible answers. Because option A कहता है statement one alone is enough to answer the questions. Option C कहता है individual statement one and individual statement two are enough to answer the question. And that is not happening here. Hence, I will definitely discard these two options. Let's have a look at the second statement. Average weight of 46 is this. A child weighing 46 kg is dropped. Now, can we determine the average weight of remaining class, that is 45 children का जो average बचता है, 45 children रहते हैं class में. अब उन 45 children का average weight we can determine? Yes! Why? Because you know 46 का average weight is this, so multiply करेंगे तो total weight आ जाएगा. And you know जिस child को आप drop कर रहे हैं, जिस child को आप include नहीं कर रहे हैं, उस child का weight भी एक specific value is given, right? So total minus this will be the remaining weight of all class, and that will be divided by 45. What that number will be, I am not interested. I am not interested in knowing that number. This is where data sufficiency gets different from the quantitative aptitude questions. There you need to identify that numerical value, and then only you can mark your answer. Here,
You don't need to identify that numerical value, but you must know the process. If you do not know the process, if you do not know the process, you cannot conclude that statement 2 alone is enough to answer the question or not. Fine. So I'm damn sure statement 2 alone is enough. And hence, my answer to question number 1 will be option B. Why not? Why not E? If your individual statement, any of your individual statement is enough to answer the given question, then we do not combine the information of individual statements. We combine the information of both the statements only and only when we are not able to get a unique answer from individual statements. If you are able to get an answer from any of the statement individually, you will not combine them. You will not combine them. Sorted? I hope it is clear. Fine. Let's talk about second question. So second question on our screen says, on which day of the week did Saurabh visit Delhi? Statement 1 says, Saurabh visited Delhi after Monday but before Thursday. So Saurabh must have visited on Tuesday or Wednesday, right? After Monday but before Thursday. There are 2 days possible. Fine. But not on an odd day of the week. Odd day of the week? Monday, 1, day 1, odd. Tuesday, day 2, even. Wednesday, day 3, odd. Thursday, day 4, even. Friday, day 5, odd. Saturday, day 6, even. Sunday, day 7. Fine? Fine. So odd day, not on an odd day. So Tuesday is second day, Wednesday is third day, and not on an odd day. Hence, Saurav has visited on Tuesday. And we have a unique answer here. So statement 1 alone is enough? Yes. So let's mark the answer as option A. No. Why? Because we have not checked option B. We still need to check option B. Statement 2 individually check करना required है. Look at your option C. It says individual statement is sufficient to answer the given question. Fine. Hence, we cannot conclude it here कि answer will be option A. There is a possibility that answer will be option A. There is definite possibility that your answer won't be option B Bombay, won't be option D Delhi, and won't be option E. इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर आ गया, इसीलिए दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है. डी कहता है दोनों से कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं आएगा. बी कहता है सेकंड से आंसर आ रहा है, फर्स्ट से नहीं आ रहा है, बट यहाँ तो फर्स्ट से आंसर आ रहा है. सो वी आर लेफ्ट विद 2 चॉइसेस. या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या आंसर ऑप्शन सी होगा. Let's look at second statement. Saurabh visited Delhi before Friday but after Monday. So with this, I can conclude Saurabh must have visited Delhi on Tuesday, Wednesday, or Thursday. Do I have any additional information? I'm looking just at statement 2, not on statement 1. ऐसा नहीं है कि जब आप statement 2 पढ़ रहे हैं तो 1 available है. Individual basis पर check कर रहे हैं. Individual basis per 1 alone was sufficient enough to answer the question. Individual statement 2 alone is not sufficient enough, does not have the enough information to answer the given question. Hence, my answer cannot be option C. And definitely, my answer is option A. My answer is option A here. Is this clear? Is this clear? Everybody? Fine. Let's look at next set of questions. So give it a try. What is Sunita's rank from the top in the class? Right. अगर आपको चीजें समझ आने लगी तो you can pause the video, try on your own, and उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन आगे देख सकते हैं. वीडियो को प्ले कीजिए, सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, आपका आंसर मैच कर रहा है, वेल डन. नहीं आता है, pause the video, go back, watch again, and then proceed. ठीक है, is this clear? So what is Sunita's rank from the top in the class? In the class of 42 children, Sunita is 29th from the bottom. See, top से कुछ रैंक होगा सनीता का और bottom से कुछ रैंक. So she is 29th from the bottom side, and this is top side. And what we know is overall there are 42 children in the class, right? So top rank plus bottom rank must be equal to 42 plus 1, that is 43. Sir ऐसे कैसे conclude किया? देखो top rank अगर 1 है तो bottom rank 42nd है, so 42nd plus 1 43rd. So top plus bottom जब भी आप करोगे तो जो भी आपका नंबर दिया उससे +1 हो रहा होगा. Fine. So 29 from bottom, so 43 minus 29.
there will be a unique answer. Fine. So statement 1 alone is sufficient enough. Statement 2 alone. Sunita is 10 ranks below Samir. Do I know position of Samir? No. So I cannot answer with the help of statement B alone, but I can definitely answer with the statement A first alone. So answer will be option A. Answer will be option A. Let's have a look at next question. Let's have a look at next question. On which day was Yasir born? Right. First statement is, other than this, his date of birth is February 29. So definitely he must have born on a leap year. That is 2004, 2008, 2012, year 2000, 2016, 2020. तो इससे आगे मत जाइएगा 24 अभी आना बचा है फाइन कोई दिक्कत he was born between 5 and 11 between 5 and 11 so between 2005 and 2011 in between 2008 is the only leap year see 5 nahi hai 6 nahi hai leap year 7 is not a leap year 8 is a leap year 9 is not a leap year 10 again not a leap year 11 it is also not a leap year though I need not consider the 2005 and the 2011 fine so definitely there will be one particular year and I will have a unique answer so statement 1 alone is sufficient enough now let's look at the second one he will complete 4 years on February 29 2012 4 years subtract कर देंगे तो 2008 आंसर आ जाएगा again this is also unique so individual statements are capable enough so answer here will be option C जी एक रिक्वेस्ट है मैंने आपसे कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिए प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिए वेदर दिस इज सी और नॉट फाइन अगर आप चाहें तो मैं भी यहाँ एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ बट आई एम श्योर इट विल बी सी दैट सेइंग if the data in individual statement alone are sufficient to answer the given question fine so let's look at next set of questions the next set of questions is on our screen how many students are there between Suresh and Mohan in a row of 50 students again यहाँ पर first person यहाँ पर last person so first plus last will be 51 right Suresh is 12th from left hand ये left hand से Suresh का position is 12th there are 11 students and Mohan is 17th from right 17th from this end right so 51 minus 17 is 34th so this person is 34th from left side 34 from left and there are 33 persons ahead of him right so question was how many students are between Suresh and Mohan so I can definitely identify 34 minus 12 there will be 22 students in between fine sir sure हैं आप 22 होंगे चलिए अगर 21 हुए तो still एक यूनिक आंसर आएगा हाँ जी आएगा बस यही तो बात हुई थी हमारी आपको याद है हमें न्यूमेरिक वैल्यू पर फोकस नहीं करना है हमें सिर्फ इतना चेक करना है whether we will have a unique answer or not so we will have a unique answer here so statement 1 alone is sufficient enough now let's look at statement 2 alone Suresh is 6 places away from Jayesh who is 20th from left hand so Jayesh is 20th from left hand so Jayesh is here लेफ्ट हैंड से 19 लोग उसके आगे हैं वो 20th है बट ट्रबल इज विद सुरेश 6 places away from Jayesh से 6 places away सुरेश किधर पे है this I'm not sure whether he is on left side or right side not given so there are two possible answers hence second alone is not enough and answer to question number 5 will be option A let's have a look at question number 6 is it 9 o'clock now if I ask you you'll simply answer yes is a unique answer if it is not exactly 9 o'clock, so you'll say no. Again, it is also a unique answer. Fine. So yes is also a unique answer, no is also a unique answer. So individually, both statements can have different answers and they'll be acceptable. Right? But ऐसा नहीं होना चाहिए. एक मिनट. हाँ. Let me see the watch. Yes, it is 9 o'clock. Then, oh, sorry. My watch is 10 minutes faster. It is not 9 o'clock. So that should not happen. You'll have to have one answer only. Fine. If it is the case, the question can be answered with the statement alone. If it is not the case, the question cannot be answered with the help of that particular statement alone. I hope चीजें समझ आई है चलिए बात करते हैं question number 6 after half an hour the minute hand and hour hands of the clock will make an angle of exactly 90 degrees with each other so will this information answer my question no because there are 44 times in 24 hours जहां पर minute hand and hour hand forms an angle of 90 degrees. Hence, I will not be getting a unique answer. So statement 1 alone rejected.
Exactly 15 minutes ago, the minute hand and the hour hand of the clock coincided with each other. तो अभी से ठीक 15 मिनट पहले अगर कोइंसाइड हुए थे तो इससे क्या टाइम पता चला? 12 o'clock. क्या 12 o'clock से हमें आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा? हाँ मिलेगा. 12 o'clock के 15 मिनट्स के बाद 9 o'clock का नहीं होगा? नहीं होगा सर. 8:45 के बाद हो जाएगा. 8:45 के ठीक 15 मिनट बाद नहीं होता है वो 8:45 से थोड़ा टाइम ऊपर होता है. शायद आपने क्लॉक्स में पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कीजिए क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट. फाइन. अगर नहीं पता है तो क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट पर ये चेक कीजिएगा. 8:45 पर द एंगल इज नॉट 0 डिग्री. द मिनट हैंड एंड आवर हैंड डू नॉट कोइंसाइड एट 8:45. दे कोइंसाइड slightly higher time than 8:45 and hence उसके 15 मिनट्स के बाद will that be 9 o'clock? Answer is no. Is no an acceptable answer? Yes. यूनिक आंसर हो गया ना. स्टेटमेंट वन में नहीं हो रहा था. कभी हाँ भी हो सकता था, कभी ना भी हो सकता था. फाइन. एक टाइम ऐसा आएगा जिसके हाफ एन आवर बाद 9 o'clock राइट एंगल होगा और 9 o'clock भी हो रहा होगा. कुछ टाइम ऐसे भी आ रहे होंगे जहां पर 9 o'clock नहीं हो रहा होगा. फाइन. सो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट इनफ बट स्टेटमेंट टू अलोन इज इनफ. सो स्टेटमेंट टू अलोन इज इनफ. हेंस आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 is B Bombay. B Bombay. Statement 2 alone is enough, but statement 1 alone is not enough. Let's look at next set of questions. What will be the ratio of men to women and children in the town? Population of town is this, of which these many are men. Fine. So ये question का interpretation समझ आएगा. Men to women and children. This ratio we need to determine. This ratio we need to determine. Fine. Can we determine this with the help of statement 1 alone? Yes, we can. So statement 1 alone is sufficient enough. Let's look at statement 2. The ratio of men to children is this, and women are double in number than the children. So if children are 2x, women will be 4x. Fine. And men will be 5x. Fine. So will we be able to determine the ratio? The ratio? Yes. Yes. सर नहीं होगा ना सर. बहुत सारे आंसर आएंगे सर. सेकेंड अलोन में तो बहुत सारे आंसर आएंगे. एक यूनिक आंसर थोड़ा ही आ रहा होगा सर. हाँ जी बिल्कुल. से टोटल पॉपुलेशन इज पी. मैन का पॉपुलेशन एम है, चिल्ड्रन का पॉपुलेशन सी है. तो 5:2. बट चिल्ड्रन का जो भी नंबर है फिर 2x. इसका डबल. विमेन आर डबल इन द नंबर देन चिल्ड्रन. तो इसका सेम नंबर ऐसा कुछ आएगा. अब अगर ये 2x है तो ये 5x हो गए. 5x होंगे तो ये 2 और 4 6x हो जाएंगे. तो 5x रेशियो 6x. तो विल हैव अ यूनिक रेशियो. फाइन. आपसे रेशियो की तो डिमांड हुई है, नंबर्स की डिमांड नहीं हुई. राइट. सो इवन सेकंड अलोन इज पॉसिबल. So your individual answer, both the statements are individually capable of answering this question. Hence, overall answer will be option C. Let's look at next question. Next question is what will be the average, what will be the compounded amount? What will be the compounded amount? $200 were borrowed for 192 months, 6% compounded monthly. सब कुछ दिया है. कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड ईयर्स में होना चाहिए, कन्वर्ट किया जा सकता है, कंपाउंडेड मंथली गिवन है. सो स्टेटमेंट 1 अलोन इज गुड टू गो. स्टेटमेंट 2 अलोन, 200 वर borrowed for 16 years at this rate of interest. Will this be enough? No. Why? Compounded monthly, half yearly, annually, quarterly, I don't know. नहीं पता है और नहीं पता है तो हम आंसर नहीं कर रहे हैं. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पर. वी डू नॉट अज्यूम एनीथिंग. सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते टाइम तो आपने कहा था कि ऐसा अगर कुछ होगा तो कंसिडर बाय डिफॉल्ट एक एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है. देखिए वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, ये डेटा सफिशिएंसी है. यहाँ पर रीजनिंग की बात होती है. तो हियर यू कैन नॉट अज्यूम थिंग्स. बी वेरी वेरी केयरफुल. in data sufficiency we do not assume anything. assumptions acceptable नहीं है यहाँ. ठीक है बच्चों. hence answer to question number 8 will be option A. statement 1 alone is enough, 2 alone is not enough. Let's look at question number 9. Are all the five friends Lina, Amit, Arun, Ali, Kane who are seated around a circular table facing the center? सारे लोग टेबल के सेंटर को फेस कर रहे हैं क्या? आंसर या तो यस होगा या नो होगा. यूनिक आंसर होना चाहिए. स्टेटमेंट देख करके हम बता सकते हैं या नहीं, यही चेक करना है. लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 1. लीना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित. अमित फेसेस सेंटर. अरुण सिट सेकंड टू द राइट ऑफ लीना. 1 2 3 4 5.
Lena sits second to the left of Amit. Amit faces center. Say Amit यहाँ बैठा है, facing the center. So if Amit is facing the center, Amit के second left पर Lena. So first on left, second on left. This is Lena, right? Arun to the sits second to the right of Lena. So first to the right, anti-clockwise. देखिए clockwise जाने पर अगर left आ रहा है तो anti-clockwise जाने पर right आएगा. First and second. अमित और अरुण एक ही पोजीशन पर बैठे. अमित और अरुण एक ही पोजीशन पर बैठे. पहली बात ये. दूसरी बात, आपको किन लोगों के बारे में पता चला? अमित, अरुण एंड मीना. आर वी एबल टू आंसर अबाउट एवरीबडी? नो. क्या सभी की पोजीशन पता है? नहीं पता है. सो दोनों तरह के पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं. सो इंडिविजुअली स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट इनफ. स्टेटमेंट वन अलोन इज not enough. So let's look at second statement. Amit sits on the immediate left of Ali, but Kane is not immediate neighbor of Amit. यहां तो facing the center वाली बात भी नहीं हो रही है. Fine. So individually second alone भी enough नहीं है. So I am sure answer is not A, not B, not C. अभी दो ही पॉसिबिलिटी है. या तो आंसर ई है, दोनों को कंबाइन कर आ जाएगा, या फिर आंसर डी है, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी नहीं आएगा. है ना? चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5. अमित फेसिंग सेंटर. अमित के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर है लीना, राइट? अमित सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली, राइट? केन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित. तो अमित के इमीडिएट नेबर पर केन नहीं है, तो केन यहां होना चाहिए क्योंकि यहां तो लीना है. फाइन. अमित सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली. अगर अली यहां है तो अली के इमीडिएट लेफ्ट, तो अली भी फेसिंग द सेंटर हो जाएगा, अली के इमीडिएट लेफ्ट. फाइन. बट लीना के साथ आपने एक बात और ध्यान दी होगी, अरुण सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ लीना. सो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, यहां तो पॉसिबल नहीं है. तो यहां से पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट. जहां हमने अभी अली को बैठाया है ना, यहां हम अरुण को बैठा सकते हैं. और अगर अरुण को आपने यहां बैठाया, इसका मतलब है लीना इज फेसिंग आउटसाइड, राइट? लीना का फेस आउटसाइड है, फेसिंग द सेंटर नहीं है, फेसिंग आउटसाइड है. फेसिंग आउटसाइड पर राइट क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट क्लॉकवाइज होता है, राइट क्लॉकवाइज होता है. फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग द सेंटर पर राइट एंटी क्लॉकवाइज. ये ध्यान रहेगा. हेंस अरुण को आप यहां बैठा सकते हैं. अब यहां से देखें तो अली 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 की पोजीशन फिर यहां हो जाएगी. तो अली के इमीडिएट लेफ्ट, सो अली इज आल्सो फेसिंग आउटसाइड. क्लॉकवाइज तो राइट है आउटसाइड में, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा. सर केन का पोजीशन तो अभी भी क्लियर नहीं है. तो देखिए केन का पोजीशन पूछा भी नहीं है. आर ऑल द 5 फ्रेंड्स फेसिंग द सेंटर? आंसर इज नो. ऑल ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर. ऑल ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर. सर ये तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता था ना? बिल्कुल आ सकता था. बट क्या सारे 5 के बारे में आपको पता था? नहीं पता था. सर नहीं पता था, फिर भी आंसर तो आ रहा था. जी हां, आंसर पॉसिबल था. कैसे पॉसिबल था? देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट के बेसिस पर, if this is Amit facing the center, Amit से second to the left is Leena, Leena से second to the right, so anti clockwise right पर नहीं, clockwise right पर जाना पड़ेगा. और यहाँ अरुण आता है, right? और clockwise जब जाते हैं तो definitely Leena is facing outside, Amit is facing inside. So I'm sure all of them are facing the center. No, all of them are facing the center. No, fine. So statement 1 alone is enough. Statement 2 alone is enough. अक्सर स्टूडेंट्स वो एरर कर जाते हैं जो मैंने यहाँ कमिट करके आपको बताई थी. अक्सर स्टूडेंट्स वो एरर कर जाते हैं जो मैंने यहाँ अभी आपको थोड़ी देर पहले कमिट करके बताया था. क्योंकि हमने अमित को लेफ्ट ले लिया तो हम सोचते हैं लीना भी लेफ्ट, लीना का लेफ्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा. बट दैट इज नॉट द केस. बात समझ में आई क्या? मैंने इनिशियली कहा था आपसे, अजम्पशन यहां काम नहीं करते. आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि वेदर यू हैव अज्यूम्ड समथिंग और नॉट. इफ यू हैव अज्यूम्ड समथिंग, यू मे एंड अप मार्किंग अ रॉन्ग आंसर. यू मे एंड अप मार्किंग अ रॉन्ग आंसर. फाइन, नहीं होना चाहिए. सो यहां इंडिविजुअल स्टेटमेंट अलोन इज इनफ. नो नो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट. देखो अभी तो आपने जो सेकंड वाला किया है ना, उसको कंबाइन किया था. फर्स्ट अलोन से आंसर आ रहा है. सेकंड अलोन की बात करते हैं. सेकंड अलोन चेक करो. सर बड़ा कंफ्यूजन है. बिल्कुल कंफ्यूजन है. हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है. बट वो कंफ्यूजन अगर आपके साथ अभी नहीं है, अभी आपको ये कंफ्यूजन अगर नहीं हो रहा है, जो सर बोल रहे हैं वो सही लग रहा है, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं. आप सर को ठीक से सुन नहीं रहे, है ना? सुनने की जरूरत है और अपना दिमाग भी लगाने की जरूरत है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. If you are not using your brain, you are just listening passively. This will not be enough. This will create troubles. Fine. So let's understand from the very beginning, without any confusion. है ना? बहुत आराम से, बिना किसी कंफ्यूजन की बात करते हैं.
So let me explain everything once again from the very beginning. It says all five friends are facing the center or not. So answer will be yes or no. Answer will be yes or no. Fine, fine. Answer will be yes or no. No third situation is possible. No third situation is possible. So look at the very first. So first of all, understand if people are facing the center, going clockwise is left and going anti-clockwise is right. Whereas if people are not facing the center, that is, they are facing outside the table or away from the center, then going clockwise is right. Going clockwise is right, right, and going anti-clockwise is left. This is facing center. This is facing away from the center. ठीक है? ठीक है? So let's look at this statement. Lina sits second to the left of Amit. Amit faces the center. So Amit is here. First to the left, second to the left. This is Lina. Right. Arun sits second to the right of Lina. So there are two possibilities. One, Lina facing the center. If Lina facing the center, going anti-clockwise is right. First to the right, second to the right. But this is Amit, not Arun. Hence, Lina is not facing the center. If Lina is not facing the center, Lina must be facing away from the center. If she is facing away from the center, going clockwise will be right. So first, second, this will be Arun. And hence, we can definitely say all of them are facing the center. No, one is facing the center, one is not facing the center. So definitely answer to the given question is no with the help of statement 1 alone. Fine. Is this clear now? Okay. Let's have a look at statement number 2. Let's have a look at statement number 2. Statement number 2 says Amit sits on the immediate left of Ali. Amit sits immediate left of Ali, but Kane is not an immediate neighbor of Amit. हाँ जी, statement 1 की information भूल जाइएगा. We are not at all concerned about statement 1. Amit sits immediate to the left of Ali. If Ali is facing the center, Amit will be here. Right. If Ali is facing away from the center, Amit will be here. All right. अभी Ali का face कहाँ है? I don't know. Kane is not immediate neighbor of Amit. So Kane यहाँ हो सकता है. 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 Statement 2 alone individual is not answering at all. Not answering at all. Fine. Hence, statement 2 alone is not enough, but statement 1 alone is enough. So I will be marking my answer as option A. Kane यहाँ हो सकता है. Kane यहाँ हो सकता है. Kane यहाँ हो सकता है. Statement 2 alone individual is not answering at all. Not answering at all. Fine. Hence, statement 2 alone is not enough, but statement 1 alone is enough. So I will be marking my answer as option A. My answer as option A. I hope सारे confusion अब दूर हो चुके हैं. ठीक है सर, पहले ऐसे समझा देते सर. देखिए मैंने वो सारी चीजें आपको पहले यहाँ करके बता दी है जो जनरली स्टूडेंट्स एरर कमिट कर जाते हैं. तो प्लीज एंश्योर कि अब आप ऐसे गलती ना करें. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. What is a two-digit number? The number obtained by interchanging the digits smaller than the original number by 63. अब आपको आंसर करना है टू डिजिट नंबर क्या है. पहला स्टेटमेंट कहता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज स्मॉलर. से अगर एक्स वाई ये नंबर था तो आई कैन रीराइट इट एज 10 into x plus y into 1. y into 1. Fine. When digits are interchanged, the number becomes yx, that is 10 into y plus x into 1. And it is given that by interchanging the digits is smaller than the original number by 63. So 10x plus y minus 10y plus x, this is equal to 63. So this will be 9x minus 9y is equal to 63, or x minus y is equal to 7. Fine. What are the possibilities? 8 minus 1, 9 minus 2. These are the two possibilities. X का value could be 9 or 8. Y का value could be 2 or 1. Fine.
There are two different answers possible. So I'll not have a unique answer with this statement 1 alone. Statement 2 alone says sum of the digits is 11. So x plus y is equal to 11. This again has different possibilities: 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2. Fine, fine. ठीक है ये? हाँ जी. So individually, again, statement 2 alone is not enough. So on individual basis, statement 1 alone and statement 2 alone are not enough. But what happens when we combine the two? X plus y is equal to 11. X minus y is 7. So if we add them together, you'll have 2x equal to 18. That is, x is equal to 9. If x is 9, y will be 2, and that will be a unique answer. So answer can be given only when we combine the two statements. Hence, answer will be option E. Option E. What is the cost of laying carpet in a rectangular hall? Cost of carpet is 450 meter, $450 per meter square. Right. Perimeter of the hall is 50 meters. देखिए पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, पर मीटर नहीं है, पर मीटर स्क्वायर. फाइन. इसके चलते ट्रबल हो जाएगी, इसके चलते बड़ी ट्रबल हो जाएगी. पहले तो आपको लेंथ ब्रेड हॉल की पता नहीं है. जब तक लेंथ ब्रेड नहीं पता होगी तब तक आप एरिया डिटरमाइन नहीं कर सकते. फाइन, श्योर, बिल्कुल. सो स्टेटमेंट 1 अलोन नॉट इनफ. दूसरा प्रॉब्लम मुझे इस पर मीटर स्क्वायर से भी है. पर मीटर होता तो आंसर ठीक रहता. पर मीटर अगर लेंथ का पता होता तो लेंथ इनटू ब्रेड वैसे कुछ कुछ करके आंसर ले आते. बट पर मीटर स्क्वायर की एक अलग प्रॉब्लम है. फाइन. तो स्टेटमेंट 1 अलोन वैसे भी किसी काम का नहीं है अगर ये पर मीटर स्क्वायर नहीं भी है तब भी. Statement 2 says perimeter of the hall is 50 meters. So 2 times length plus breadth is 50 meters. So what I know is length plus breadth is 25 meters. तो अब तो आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा. Why? Sir, L is equal to 25 minus B कर दो और L into B करोगे तो एरिया आता है, और L को L रखो, L को B से रिप्लेस कर दो, 25 माइनस B कर दो, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा. 25 इंटू बी, सो 25b माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा. देखिए हो तो रहा है बट अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत सारे है ना. सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज आल्सो नॉट इनफ, 1 अलोन इज आल्सो नॉट इनफ. इवन व्हेन वी कंबाइन द टू we will not be able to get a unique answer. Hence, in this case, for the very first time, we will be marking our answer as option D. As option D. So here the answer will be option D. Let's look at next one. What is the profit earned by selling a watch for this much? Right. Total cost price of 5 such watches is equal to the selling price of 4 watches. Right. एक वॉच का सेलिंग प्राइस पता है तो 4 वॉच के सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे, 5 के कॉस्ट प्राइस आ गए. तो कैन आई डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज? यस यस यस, प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा. कितना होगा? कितना होगा? 1/5, दैट इज 20%. 20%, 20% अगर मिल गया तो 20% का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. तो फर्स्ट अलोन से तो आंसर आ रहा है. 25% प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय सेलिंग ईच वॉच. सो इससे भी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी. सो फर्स्ट अलोन इज इनफ, सेकंड अलोन इज इनफ. सो आंसर इज सी. Answer is C. Let's look at next set of questions. What is the area of a rectangular plot? The length of plot is this, but I don't know breadth, so I cannot determine area. So first alone is not enough. The length of plot is thrice the breadth. Again, statement 2 alone is not enough. But when we combine the two, we can answer it. So that will be E. When we combine the two and answer, then we can answer it as option E. Let's have a look at next one. How is the word gates coded in the code language? BRICK is coded as this, PIN is coded as this. C. BRICK is coded as LDJSC. Fine. PIN is coded as QJQ.
P plus 1 Q, I plus 1 J. This is plus 1, this is plus 1, and this one is N, O, P, Q. So N plus 3 is Q, right? Plus 1, and plus 3. Here, the pattern is different. So I'm not able to conclude anything from statement 1 alone. Fine. So statement 1 alone is good, not good enough. Water is coded as WATER. वाटर देखो, अगर आप इसे रीअरेंज भी करोगे CSJDL, अगर आपने ऐसा रिवर्स कर दिया तब ये कितना है प्लस 1, 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 और ये कितना है प्लस 1. सर अगर यहाँ रिवर्स कर दें तब भी प्लस 1 एंड प्लस 3 आ रहा है, राइट. अगर ये O होता तो ये फिर सेम पैटर्न हो जाता, बट ये O नहीं है, ये Q है, ध्यान दीजिएगा, है ना, है ना. इसीलिए जब पैटर्न ही फिक्स नहीं है तो आई कैन डेफिनेटली नॉट आंसर विद द स्टेटमेंट 1 अलोन. लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 2 अलोन नाउ. लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 2 अलोन नाउ. Statement 2 says water is coded as SFUBX. WATER is SFUBX. So reverse it. XBUFS. So this is plus 1. This is again plus 1. Plus 1. So देखिए सेकेंड वाले पार्ट पर क्या था. DIST. DIST is coded as ITJE. EJTI. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Again T2I में गड़बड़ होगी. फाइन, सेम इशू. तो इंडिविजुअली इवन हम कंबाइन कर लें तब भी कंफ्यूजन बना रहेगा. इसके चलते आंसर टू दिस वन इज D Delhi. Even after combining the two, we cannot have a unique answer. That's clear. जल्द ही आप एक और वेरिएशन देखने वाले हैं. लेट्स हैव डन दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. एक दूसरा टाइप भी देखेंगे डेटा सफिशिएंसी में. एंड व्हाट दैट दूसरा टाइप इज, जल्दी पता करते हैं. Who among A, B, C, D and E, each having a different height, is third tallest? तो देखो, shortest, second shortest, third shortest, fourth shortest, and tallest. So this is tallest one, this is tallest second, this is third tallest, right? So basically third person आपको पता करना है, right? This is fourth tallest and this is fifth. Everybody has a different height that is given. E is shorter than only B. So E is shorter than only B. So what I know is E के पहले there will be three different people. There will be three different people before E. अगर मैं increasing order of height arrange करूं, first person, second person, third person, fourth person is E and then it is B. ठीक है? ठीक है? ये सिचुएशन है स्टेटमेंट 1 से. So can I answer this third tallest? No, I don't. As of now, with statement 1 alone, I cannot answer this. So let's look at statement 2 alone. Let's look at statement 2 alone. Statement 2 alone says C is taller than only A. C is taller than only A. There are three more persons with the help of this second alone. This was first alone, this is second alone. So I can definitely not answer using individual statements. But what happens when we combine the two? When we combine the two, we are sure that shortest person is A, then C, then a person, then E, then B. Fine. So this person has to be D and this will be a unique answer. Hence, we can answer this after combining the two. So answer will be option E. Option E will be the answer. So these are the first 15 questions जहां आपको एक particular pattern से बात हो रही थी. Let's look at other variations. अगले 5 questions थोड़े से different है. कैसे देखते हैं. प्रोसेस अभी भी यही करना होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. क्या डिफरेंस है देखिए, अब आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. इट सेज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल. पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज दिस, एरिया ऑफ हॉल इज दिस, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर स्क्वायर मीटर
is this, per square meter is this. Fine, fine. So individually perimeter, rectangular hall है, so length plus breadth को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will be getting 76, or you can say definitely L plus B is 38, and area of hall L into B is 336. Fine. So यहाँ से you can determine the value of any of the two, that is L is 38 minus B. So substitute this value, 38 minus B into B is equal to 336. So statement 1 अलोन से आंसर नहीं आ रहा है, statement 2 अलोन से आंसर नहीं आ रहा है, बट हमने अभी अगर दोनों को कंबाइन कर लिया तब क्या हो रहा है, 38B minus B square minus 336 is equal to 0. Rather एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, B square minus 38B minus 336 is equal to 0. अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर B के दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो उनमें से कोई नेगेटिव आ रहा है क्या? अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तब तो आपका आंसर सेफ है, यूनिक आ जाएगा. अगर दोनों पॉजिटिव आए तो फिर आपका आंसर यूनिक नहीं होगा, दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, और दो डिफरेंट वैल्यूज अगर आएंगे तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा. बट क्या इन दोनों से आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये थर्ड की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, मुझे थर्ड की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी. सो आई कैन डेफिनेटली एलिमिनेट एनी टू ऑफ द थ्री. नहीं हो रहा है काम. फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा काम. सेकेंड एंड थर्ड से काम हो जाएगा क्या? सेकेंड एंड थर्ड से काम हो जाएगा क्या? हाँ, आंसर आ जाएगा. सर लेंथ और ब्रेड्थ तो नहीं पता चली, उससे क्या फर्क पड़ता है आपसे? कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर हॉल, हॉल का एरिया गिवन है और पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल एरिया के लिए वैल्यू आ जाएगा. सो आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली. सेकेंड एंड थर्ड ओनली. जनरली लोग यहाँ पर आंसर डी मार्क कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है बी की वैल्यू आ जाएगी. जैसे ही बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, फिर हमें डिटरमाइन करना होगा और आंसर आएगा. अरे बट उसकी जरूरत नहीं है ना, आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, आप दो स्टेटमेंट्स को पहले कंबाइन करेंगे. इंडिविजुअल पहले चेक किया जाता है, इंडिविजुअल से काम नहीं होगा तो हम दो को कंबाइन करके देखते हैं. दो जब कंबाइन होकर काम नहीं कर रहे होते तब हम तीन को कंबाइन करते हैं. ठीक है, प्रोसेस क्लियर है. सो वी चेक individual on individual basis, but none of your options is saying an individual statement alone. So I'll not be checking individual statement alone. I'll be checking first and third combined, second and third combined, if required first and second combined. Fine. Then only I'll go for all three, and then even after three we cannot mark it. Fine. ऐसा कुछ हो रहा हो, यही थोड़ा सा डिफरेंस है. Basic process remains same. So here the answer will be option B. Let's look at next one. What is the marks scored by Abhijit in English? Marks scored by Abhijit in mathematics are more than his marks in science by 20. So mathematics is science plus 20, right? Total marks, maths, science and English, maths plus science plus English is 197. This is statement 1. This is statement 2. Marks scored by Abhijit in science are more than in English by 12. So science is English plus 12. So individually, I am not able to answer. But if I combine first and second, then two I'll not be able to answer, because science and English दो variable रह जाते हैं. Fine. If I combine first, second and third, तब भी I still will have a problem with mathematics. Fine. If I combine first and third, तब this mathematics will be equal to English plus 32. Fine. Still आंसर नहीं आ रहा है. तो फर्स्ट सेकंड से नहीं आ रहा है, फर्स्ट थर्ड से नहीं आ रहा है, सेकंड थर्ड से भी नहीं आ रहा है. तो सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है, एनी टू नहीं आ रहा है, ऑल थ्री कंबाइन आ जाएगा. देखिए यहां आपने फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके ये वैल्यू डिटरमाइन कर लिया. नाउ पुट इट हियर, साइंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, पुट इट हियर एंड देन sorted. Only English will be the variable. Fine. So all three is the right answer here. Let's look at next question. What is the area of right angled triangle? Given है देखिए right angled triangle. At times ये right angled triangle given नहीं होता है, but यहाँ given है. Base of the triangle is x centimeter. Height of the triangle is y centimeter. Hypotenuse of the triangle is z centimeter. Right. So क्या इससे आंसर आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर
area of triangle is 1 by 2 into base into height, but answer नहीं आएगा. Why? Because x and y are variables. So I'll mark my answer as I'll mark my answer as I'll mark my answer as E. ये क्या हुआ? हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ जी, हमारी बात हुई थी, आपको याद हो तो. आपको एक यूनिक आंसर चाहिए, राइट? अब आपके ऑप्शंस में वो डेटा इज नॉट सफिशिएंट गिवन नहीं है, तो आप क्या मार्क करोगे? नन ऑफ दी अबव ही तो मार्क करोगे, क्योंकि इनमें से किसी से आंसर नहीं आने वाला. इनमें से किसी से आंसर नहीं आने वाला. फाइन. चलिए नेक्स्ट वी हैव how much time will the train X take to cross another train Y running in the opposite direction? Train X crosses a signal pole in 6 seconds. Right? Ratio of speed of train X and train Y is this. Length of two trains together is this. हाँ जी. अब क्या किया जाए? सर वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट बता दो. चलिए देखते हैं, ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखते हैं. इंडिविजुअल अगर एक पोल है तो इसके लिए टाइम टेकन बाय ट्रेन इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है. सो ट्रेन एक्स सिग्नल पोल को 6 सेकंड्स में कवर करती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स. सो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स बाय 6. फाइन. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वाई. तो फर्स्ट अलोन से आंसर नहीं आ रहा है, सेकंड अलोन से भी नहीं आ रहा है, थर्ड अलोन से भी आंसर नहीं आ रहा है. वी कैन डेफिनेटली डिस्कार्ड दीज 3 ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखिए, क्या आप डी से आंसर कर पाएंगे? देखिए डी से आंसर होता है क्या? बिकॉज यहां पर रेशियो दिया है स्पीड्स का. टाइम का रेशियो पता कर सकते हो, बट टाइम नहीं पता कर सकते. फाइन. लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स टुगेदर इज, तो अब हम ए एंड बी देख लें, तो ए एंड बी से भी आंसर नहीं आ रहा है. तो आंसर विल बी ऑप्शन ई. सर तीनों को कंबाइन करके भी नहीं आएगा क्या? हाँ जी, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अपोजिट ट्रेन है. तो लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन वाई अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन वाई. दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड. बट आपको स्पीड ऑफ एक्स पता है क्या? हाँ पता है. स्पीड ऑफ ये वाला वैल्यू पता है, हाँ ये 500 है. स्पीड ऑफ एक्स पता है क्या? स्पीड ऑफ एक्स इज, लेंथ ऑफ एक्स मुझे नहीं पता, मुझे लेंथ ऑफ वाई भी नहीं पता, मुझे दोनों का सम पता है. इसके चलते ये ट्रबल होगी. फाइन. अगर मुझे लेंथ ऑफ एक्स पता होता यूनिक, तो आई कुड हैव आंसर्ड इट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो. यूनिक वैल्यू नहीं है, हेंस आई कैन नॉट आंसर इट. सो आंसर इज ऑप्शन ई. वैसे भी अगर हम 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो है वो हमारा आंसर होगा ना. Let's have one final question for the day. What is average salary of 15 employees? Average salary of 7 clerical out of 15 employees is this. So remaining 8 ka average salary, I don't know. So first alone, not enough. So let's eliminate this one. Average salary of 5 officer is this. Again, remaining 10 ka, I don't know. So second alone, not enough. Average salary of 3 sub staff is this. What about remaining 12? I don't know. So individually, this is also not enough. If I can answer with these two, no, 7 plus 5, 12. Still, I need to know the remaining 3. Fine. So I cannot answer with this. So answer will be option E. So I hope you had a great learning out of this session. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है. डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात कर रहे हैं एनआईएफटी एंड डाटा की, साथ ही साथ यूसीड सीड जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. लॉजिकली अगर बात करें तो हो सकता है कि एनआईडी में भी पूछ लिया जाए, हो सकता है कि जेई बीआर के किसी अटेम्प्ट पर भी ये पूछा जाए. बट आई एम श्योर अबाउट फर्स्ट 3 एग्जाम्स, दैट इज एनआईएफटी, नाटा एंड यूसीड ऑब्लिक सीड, जो भी आपका टारगेट है. फाइन. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी सीइंग यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, प्रिपेयर वेल, स्टडी हार्ड, कीप वर्किंग रेगुलरली आपको काम करना है, एंड prepare very well for your exam. Thank you so much, guys. I'll see you in our next video.